स्टूडेंट्स, इट इज़ विनोद आचार्य। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किए थे वो डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर न्यूमेरिकल किए थे हमने। यस, आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और दो न्यूमेरिकल्स मैंने लिखे भी हैं। उनमें पहला न्यूमेरिकल है, पहली जो प्रॉब्लम हमारी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। किसी स्ट्रिंग धागे की फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L, ओके, टेंशन इन द स्ट्रिंग T and mass per unit length of the string. It means frequency depend on three things: length of the string L, tension in the string T and mass per unit length of the string. Using dimensional analysis, derive formula for the frequency. Okay, solve कीजिए। As we know, frequency denoted by nu, yes, denoted by nu, and that is equal to reciprocal of time. It means T इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? T इनवर्स। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? T इनवर्स। अब देखिए, दिया है हमें न्यू डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L की पावर A, टेंशन इन द स्ट्रिंग पावर B and mass per unit length of the string C. L, T और B तीन चीजों पे डिपेंड करता है। A, B, C उनकी पावर लगा दी हमने। यस, व्हाट इज L? L is the length of the string having formula L. Yes. What is T? T tension in the string, and tension in the string is equal to the force, and that is ML T minus 2. And what is M here? M is mass per unit length. It means M by L. It means ML minus 1. ML minus 1. Now nu is equal to K, L की पावर A, T की पावर B, M की पावर C, इक्वेशन 1। अप्लाई डायमेंशनल एनालिसिस। We have T inverse on the left hand side, and then K is the dimensionless constant. L, what is L? L A, yes. T means force, tension in the string, ML T minus 2 power B. What is M? M is the mass per unit length, ML minus 1. And now we have L power A, M की पावर B, L की पावर B, T की पावर minus 2B, M की पावर C, L की पावर minus C. Combine it. तो अब M की पावर B प्लस C, L की पावर A प्लस B माइनस C एंड T की पावर माइनस 2B। ये हुआ M0 L0 T minus 1 equating light powers, in other words principle of homogeneity. It means M की पावर B plus C और इधर M की पावर 0
एल टी पावर ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 और माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड देन b इज इक्वल टू 1/2. Then 1/2 plus c is equal to 0 and then c is equal to minus 1/2. And then what about a plus 1/2 minus 1/2 is equal to 0. Then a plus 1/2 plus 1/2 is equal to 0. Then a plus 1 is equal to 0. Then a is equal to minus 1. A is equal to minus 1. Now equation 1 b term, frequency is equal to k m की पावर a, नहीं l है हमारे पास, yes, L की पावर a minus 1 t raised to the power t, tension in the string 1/2 and mass per unit length m raised to the power minus 1/2. It means it becomes k by L. L नीचे ले रहे हम, k by L और t 1/2 divided by m 1/2. And now the expression can be written as frequency is equal to k by L under root t by m. Yes, it is our required expression. ये हमारा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हुआ. ओके, अब ये दूसरी प्रॉब्लम पढ़िए. The surface tension of a liquid, surface tension is the property of the liquid. Yes, याद लीजिए सरफेस टेंशन का फॉर्मूला तो जरूर चाहिए हमें. सरफेस टेंशन ऐसे डिनोट कर लेते हैं, सो इट इज फोर्स बाय लेंथ, फोर्स बाय लेंथ. और हमारे पास फॉर्मूला आया m L0 T माइनस 2, L से L कैंसिल हो गया. ये सरफेस टेंशन है. द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है लिक्विड की, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द लिक्विड m, प्रेशर ऑफ द लिक्विड p एंड रेडियस r ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. एक ट्यूब होती है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब, बाद में हमारे सिलेबस में है ये. ईस्टी रेडियस, इसमें हमने अपना लिक्विड डाला हुआ है. ईस्टी जो रेडियस है वो r है, जिस ट्यूब में लिक्विड को डाला हुआ है. और रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. आपको सरफेस टेंशन के लिए वो फॉर्मूला बनाना है. ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द सरफेस टेंशन यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस. यस, एज वी नो surface tension S is equal to force by length and we have m L0 T minus 2. Given that it is given that the surface tension is directly proportional or depends on the three property of the liquid: mass of the liquid into pressure of the liquid as well as radius of the capillary tube, and that is A, B and C. Then S is equal to K m raised to the power A, P raised to the power B and R raised to the power C. Yes, it is equation 1. It is equation 1. We have also given K is equal to 1 by 2.
वो कहता है जी जब भी आप फॉर्मूला बना लोगे पूरा तो बाद में जो आपने डायमेंशनल कांस्टेंट है उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो 1/2 आई हुई है, ये आपने 1/2 पुट करना है बाद में। अप्लाई डायमेंशनल एनालिसिस, यही हमारा मेथड है, अप्लाई डायमेंशनल एनालिसिस ऑन बोथ साइड्स। Then we have m L0 t minus 1 t minus 2, yes, t minus 2. Then mass of the liquid mt power a, pressure, what is pressure? फॉर्मूले याद रहने चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया, force mlt minus 2 divided by L square, then pressure is ml minus 1 t minus 2, ml minus 1 t minus 2 raised to the power b, r is the radius of the capillary tube, इस ट्यूब की त्रिज्या है, रेडियस है, वो लेंथ है, it means L की पावर c. Now we have m की पावर a, यहाँ m की पावर b, l की पावर माइनस b, t की पावर माइनस 2b, ध्यान से m की पावर b, l माइनस b, t माइनस 2b एंड देन lc, कंबाइन दीज, m की पावर a प्लस b, यस एम ए यहाँ से आया और एम बी यहाँ से आया, एम ए प्लस बी, एल की पावर यहाँ एल था नहीं, माइनस से बी प्लस सी, और टी की पावर माइनस 2b. एंड व्हाट अबाउट द लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड वी हैव एम L0 t minus 2, yes, equating light powers. Then we have m की पावर a plus b, m की पावर 1, इधर m की पावर 1 है, a plus b is equal to 1, माइनस b plus c is equal to 0, माइनस b plus c is equal to 0 and minus 2b is equal to minus 2, yes, माइनस से माइनस कैंसल एंड देन b is equal to 2/2 and b comes out to be 1. Yes, put this here, minus 1 plus c is equal to 0, it means c is equal to 1, yes, it means c is equal to 1. And after that, a b plus 1, a plus b is equal to 1, it means a is equal to 0, it means a is equal to 0. Now put these value in equation, now put these value in equation 1. क्या हुआ हमारे पास? सरफेस टेंशन आया हमारा एस टी, एम की पावर 0, एल की पावर 1 and oh sorry, L नहीं, P is here, yes, P is here, P raised to the power 1 and R raised to the power C, that is 1, it means S is equal to K P R, and after that we have K की वैल्यू दी हुई है, K is given and it is half, it means it is 1/2 P R, yes, it is our required expression, it is our required एक्सप्रेशन. उसने हमसे यही पूछा था जी सरफेस टेंशन इन 3 चीजों पे डिपेंड हो रही है, आप उसका फॉर्मूला बनाइए. हमने उसका फॉर्मूला बना दिया है. लेट अस सी अनदर प्रॉब्लम, अनदर वन.
we have given a expression F is equal to mv square by r. Check the correctness of this equation. This equation is right or wrong? Apply dimensional analysis on both sides. We have ml t minus 2 on the left hand side, and on right hand side m is the mass velocity, having formula lt minus 1, yes, square divided by r is the radius of the circle on which the particle is moving, and it is also l. Then we have m l square t minus 2 divided by l say lt power 8 cancel हो रही, and then at last we have ml t minus 2. Yes, left hand side is equal to right hand side dimensionally, and this shows that the equation